Assalamualaikum. I welcome you all in today's seminar. And today we are going to listen from Dr. Marwa about her research. She has done her basic degree from University of Agriculture, Faisalabad, and later on joined for MS, MPhil and PhD University of California. And nowadays she is doing her postdoc from Stanford School of Medicine. So please give a big hand to Dr. Marwa. Can you say this? First, I would really like to thank all of you for being here with me today, and I'm also being very thankful for the administration of the CAM and Dr. Ezra for providing me this opportunity. It is my great pleasure to share with you some of the work that I was being involved in the past decade about the Integrative Multi-Omics Strategies for precision biomarker discovery and targeted therapies in brain disorders. So before proceeding further, I thought it would be nice that I can give you a little glimpse of who am I, from where I started my journey and where I'm standing today. So just like to move with that, who is Dr. Marwa Zafrullah? I did my bachelor from University of Agriculture, Faisalabad in plant breeding and genetics, and after being the top of my class and the medalist of the batch, I being selected from all over the Pakistan for one of the very highly competitive scholarship by the USAID. And that scholarship led my way to get into the United States, more specifically for my master's degree. I went to the United States for having my master in integrative genetics and genomics from the University of California, Davis, and I will that program. Not only in the United States right now, but all over the world. They hire the best specialists. They also call the people from all over the United States and they gather them in this particular building so that the people can specifically work on the different aspects of the autism. Other than autism, there are many other disorders that are being studied at the UC Davis Mind, and I will give the little idea of some of the disorders that I was being working during my graduate school. I did my PhD in integrative genetics and genomics, and along with that, I also completed 2 additional 5-year degree programs while I was going through my PhD in designated emphasis in biotechnology and the designated emphasis in translational research. And I was the only person at UC Davis so far who completed both these programs along with a PhD, and it is on my diploma being written and sent it to me by Vice Chancellor. So then now I am working as a professional neuroscientist. I'm affiliated with the Stanford School of Medicine, and more specifically, I'm working with the Department of Neurology and Neurological Sciences. And the space that I'm being involved right now is a neuromuscular space. This is like the next slide. I just put a little, small short ideas of all the different work that I've been involved. So if any one of you have any of this interest and you're looking forward to talk with someone that you think can share the ideas and can establish any kind of collaboration, or if this is a space of your interest, I'm more than happy to talk with. I like to talk, as Dr. Moise was also saying that scientists like to talk, so I like to go to different conferences. I was being part of almost many national and international conferences all over the world in the past decade to share my work. I was also being very heavily involved in an organizational of different events at UC Davis, at Stanford, and even at the other places as well. And this is one of the pictures that I had with one of the very popular writers from Stanford University, and his name is Dr. Matt, very well renowned, and I invited him as one of my guests during the symposium that I was organizing. This is a picture that I was showing you that you can not only work on the institutional space, but you can also be working as an organizer for many other world conferences, even if you're sitting in Pakistan. So this is a picture where I was being one of the organization of the world leading precision conference. And in that was there all the different tracks, so you can talk with them, you can communicate, and they can see how you can collaborate with them well. So I am currently working with the Stanford Medicine. We are leading a neuromuscular program at Stanford. We are working in a clinical space. We are also being very heavily working in the research space. This is a representation of the student, is that along with working on scientific activities, I also been very actively being a part of different scholars, student, even in the academic space and working with administration. I like to speak, as I said. So I always speak about the issues of the students, scholars, and now I'm being very actively speaking about the issues
that, sometimes we are being facing because we are not being upfront at this moment. So I'm trying to connecting a bridge right now is between the medicine and administration. So that's a kind of like some of the activities and effort I'm putting in. And I just came to know last day that I was being elected as a board member for the Association of Women in Science, which is one of the biggest representation in the United States. And they are operating in all over the United States. They have different chapters. They are being one of the very global network. And I thought that I would be share with all of you, especially all the wonderful women scientists who are sitting over here, that if you are being interested in places like this, you can work with them, you can share your work, you can be a part of them and can also contribute. So this is all about me. Now we can move to the science part, right? The fun part. So today I'm going to talk about the biomarker discovery, and I'm also going to be very interested in talking about the targeted therapeutic space. And in that, I thought that it would be like, the interest of all of you, if just speaking about the one particular aspect, I bring one integrative approach and show you that how we can use one technology to get the information not about only one specific disease or one specific subject, but we can apply that technology to all over the space to have a comprehensive information. So the first disorder that I'm going to be shared with you, and this is the main disorder that I worked during my PhD for the 4-year degree program at my institute, is called Fragile X-associated tremor and ataxia syndrome. Shortly, we call it FAXTAS. FAXTAS is a neurodegenerative disorder, which means that the neurons of the human body start dying as you are progressing in the age. The onset of the disorder, as being expected, I said it's a late onset neurodegenerative, which means that the onset of disorder is about 50 years. So when the people start passing from 50 years to onward, they start showing the symptoms of the disorder. It is a rare disorder, which means that the prevalence of that is 1 by 8,000. So that's why we do not have such a heavy, high population. But the population is very highly prevailing right now. It's growing, and the diagnostic capability is helping us to finding those patients with the time. This is an excellent disorder, which means that the male individual is affected more than the female, because male have only one X chromosome. So if that X chromosome is affected, the person is going to develop the disorder. On the other hand, the women have 2 X chromosomes, so we are expecting that one X is compensating the effect of the other X chromosome, right? Now, what are the clinical features of that? The clinical feature of the disorder is intention tremor, ataxia, Parkinsonism, reduced sensation, pain and muscle weakness, cognitive decline, anxiety, depression, moodiness, or irritability. So these are all. Sometimes we saw 1, 2, 3 symptoms. Sometimes you're seeing that all the combination of symptoms are coming in. Now, of you who are being interested, like how this disorder developed, what is exactly the reason behind that? So disorder is a monogenic, which means that there is a single gene who is responsible for the development of that, and we call that gene is FMR1, Fragile X Mental Retardation Gene 1. In the normal individual, like you, me, and many others, the number of CGG repeats in the 5' untranslated region of the gene is about 5 to 45. When the number of repeats exceeds from 55 to 200, at that moment we see that there is about 2 to 8 time increase in the transcription of the gene that leads to the development of the FAXTAS. So basically, in the normal individual, we have one specific range, and when we exceed from that range to all this huge number, that's the time when the individual starts developing other disorders, and we saw the symptoms. Now, how this extended repeat is contributing to the development of the symptoms is this, right over here. What is it causing this disease right now because of this expansion? There's 2 models right now that are being prevailing in the field, and I would say one of them is more accepted as compared to the base of all the scientific facts that is available as compared to the other one. The first model that we said is called protein sequestering model. So what protein sequestering model said? It said that when you have such a high level of RNA, mostly about like 2 to 8 times more than the normal individual, what that RNA do? It start making the loops. Just think in the term of thread. You have 1 piece of thread, and then you have 1,000,000 pieces of thread. It is much easier for that thread to start making a loops or to start making like a tangle structure. When you have these loops, they are way more stable, and what they do, they start sequestering a very important proteins that being involved in a downregulated many functions. So by fact, we found that all of these number of proteins that being involved in the splicing, we are seeing that they are working with the mRNA mislocalization, stress and immune effect, and also a microRNA. All of these very important proteins are found to be
basically sequestered by these DNA RNA loops. And how we found them, we saw them in the inclusions that we obtained from the actual brain of the diseased individual. So you saw that they are all the different sequestering of these proteins, and they never localized to the right place. The second model that is being, I would say, there's a studies coming up, they are supporting this, but it's not being like very much accepted at this moment, or very much laid the foundation. It's called the repeat associated non-AUG RAN translation. This is a concept. These both models are also being very common, not only in, I would say, specifically in FACSTR, but they're also being very common in some other disorders as well. So in that case, what happened is that when you have this RNA hybrid and loop structure, instead of starting your translation from the specific start codon, it started moving it to somewhere else. So it basically deceived the translation machinery, and it said, hey, you know what? No, this is not a right place to start the translation. You should have to go 10 steps ahead and start the translation from there. So when it machinery moves 10 steps ahead, it starts adding the amino acids, which are not the part of normal protein structure. And that's why we have a toxic protein, or we call them truncated proteins, which our body doesn't know how to do, what to do with them. And those truncated proteins are being the one who lead to the development of the disorder as well. So this is the basic models that support that how this single nucleotide repeat is being involved in the development of such a complex neurodegenerative disorder. Now the question is, what exactly that I was being interested and I was being looking for? Because it is a monogenic disorder, it is very easy for us to know that, who is carrying this extended repeat. We can simply do the genetic test. We can also look at the family history, and we can identify the individuals, especially these pre-mutation allele individuals, who have this extended CGG repeat. But what we don't know, when they will develop the symptoms of the disorder, when exactly they will progress, when the first symptoms will come. That's a very important question. And why is it important? For me specifically, for any clinician, for all of you who are working, in the therapeutic space, mostly these neurodegenerative disorders, they have very aggressive nature. And when I say they have an aggressive nature, what does it mean? It means that the point for developing of the symptoms to the point when they basically leave this world, you have a very less time to protect and save that patient. That's a problem. In a FACSTS, on average, we have 3 years. So the symptoms started so commonly. Sometimes we have patients come in clinic, totally normal. We know the person is carrying this extended repeat. They come in the clinic, they sit in the clinic, we give them a pen, simple pen. Oh, do you write something for me, right? And what happened? The pen dropped. This is very simple. It's like I'm looking, oh, okay, pen drop. This might be very simple for all of us because we are not being in this range. But when I give the person a pen again, I was like, oh, no, it's just okay. You can take it again and write something. Pen drop, pen drop, pen drop. What does it mean? It means that the symptom, this might be the very first symptom that I'm seeing in the clinic, which is so minor. Maybe any one of us never even think about that. But the person who is carrying this disorder and who have this genetic reason, this is the first symptom that we can see. And from this minor symptom, for the person to shake like a tree, literally we have to hold them like this, and being bedridden is the 3 years. So think about the family. Think about all the healthcare now that they did. Think about all the, infrastructure that is going into that. And that's why it is very important for us to know that when they will develop the symptoms, is there any way we can know that ahead of time so we can start helping them ahead of time? Now the question sometimes people ask me is oh, if you know that they have a genetic reason, why don't you start giving them a drug, earlier? And I was like, imagine for a second, you're a normal person, right? You're walking normally, and I told you that you might have a genetic reason that shows you that within the next 20 years you will develop a disorder, so I'm going to give you that particular medication to save you. Do you think that person is going to take a medicine? Anyone from the audience? Never, right? It's like, what are you talking? Why should I take a medication for some of the things that I don't even have single symptom in my body, and you say that I might develop in 20 years and then I will die in 3 years? What are you talking, So we doctors are here for the hope. And that's why it is necessary for us. It is very important, not only for this. When I'm talking, this is like a one case. But for all the brain disorders, it is very necessary to know how we can detect those changes ahead of time.
So for understanding the need of that, the UC Davis Mind Institute, in a very first time ever in the history, started the first of its longitudinal study. In that longitudinal study, what they did, they recruited the people from all over the US and as well as from Canada who have no genetic mutation, like a healthy, normal individuals. Along with that, they also recruited the individual who have this extended repeat, but they have no symptoms of the disorder. Then they monitored those people for 7 to 10 years. The day when I joined my PhD, at that time, this study was in the 7th year. From 7 years, they are calling those patients again and again to see if they develop the symptoms, and they are going through all the tests, and they are also being, examining in all the criteria. Within 7 years, when I started joining the UC Mind Institute, at that moment, we had 2 distinct groups. First group we call the converters. So converters are the individual who develop the symptoms of the disorder. The second group was the non-converter. Non-converter was an individual who had this repeat, but they did not develop any symptoms. And that is the beauty right here. Why is it the beauty? Because mostly when we work in the clinical space, we have disease group or we have a control healthy group. The main point is that you are not interested in seeing what changes happen when you already have a disorder. You're interested in seeing what is actually happening when the person is on the road to develop the disorder, when they don't have the symptoms. What are the changes happening that time? And when they develop the symptoms, the same people, what are the changes happening at that time? This is the one that we need, and that's why now we're moving toward the longitudinal nature of the studies at this moment. So I decided that it would be interesting to use the multi-omic nanotechnology platforms to get the information out of these specific cohort, that converter, non-converter, and healthy controls, and see what kind of changes are happening in these individuals who are developing the symptoms along the way or along the route. The first one that I'm going to be shared over here with you is a metabolomics. So metabolomics is that the study of these small chemical compounds, the metabolites that are happening in your body. With the time, we know that these metabolites have also been a very significant role in the way that how the disease is being developing. So the time when I joined the study and I decided I'm going to do a metabolomic profiling, at that time there was very limited literature out there. You can see only these few studies. And all of these papers were only talking about disease group and the normal individual. There was no study that is talking about what changes are happening when you're progressing in the disorder. So I used the different metabolomic platforms. We use the mass spectrometry, we use the orbit mass analyzers, we use a gas mass spectrometer, all of these very high advanced tools along with the computational tools to see what kind of metabolomic changes are happening with in this individual. So this very first piece right over here, what I'm showing you is that I identified 47 differentially expressed metabolites in the healthy control individual as compared to the whole PM group. When I say whole PM, we are talking about whole converter and non-converter, the FACS test, the one that have whole, PD mutation allele right over here. So this is the piece that is easy to get for most of the papers. Why? Because you have disease group or you have a healthy group. Now, when the beauty comes in is that I was also being interested that from where these metabolites are being associated. Is there any specific class that they're being linked to, or are they all over the place? I found that they are being very heavily associated with the lipids, and then we are moving forward with the other groups as well. The second part, where we actually look at the biomarkers. So the first piece was that, can we see the biomarker of early diagnosis? And I identified that we have a number of biomarkers that you can see over here that are expressing in the converter individuals even when they don't have symptoms. Which means that the baseline, the first visits, the very few first visits, when they don't even have any kind of symptoms, we have the metabolites that are being changing. And those metabolites keep changing when they develop the disorder. So we call them that these are a biomarker of early discovery or early diagnosis, because you can see these metabolites even when you don't have any symptoms. And up to the surprise, most of them are being associated with the lipids, and then they go to the other categories as well. The second group that I found, we call the metabolic biomarker of FACS disease progression. In this, we look at the biomarkers who are changing at the first visit, and then they keep changing at all of the subsequent visits for them. So it means that these biomarkers have a capability to tell you that how the changes are being happening when you're going forward in your disease progression.
Same pattern. We see that most of them are being associated with the lipids as compared to the other classes. Then, the fun part was there is like in a lot of neurodegenerative disorders, we know that lipid metabolism is being dysregulated, but this is the very first time we found that it is dysregulated also in the FACS test. So it means the pattern that we're observing in other neurodegenerative disorders like Alzheimer, Parkinson, we observed the same pattern here. Then we saw that these lipids are not associated with one particular class. They are basically all over the place, as you can see. So it's not like there's a one specific lipid mechanism that being dysregulated. It seems like the overall, the umbrella of the lipid is the one that is being dysregulated. The second one is over here is that we look at the ceramides. So ceramides are the metabolites that are being associated with a lot of different neurodegenerative disorders. They're being claimed as a biomarker right now for Alzheimer. They already tested in the clinic, and they're making their way out there. So they are being like one very interesting class, and we found that ceramides are also being dysregulated in the FACS test. Then I bring for you the two very interesting metabolites. The first one is called lactate, which is being associated with your Krebs cycle, with your energy cycle. So it means that when you have the disorder, it is not only your lipid mechanism being compromised, but it also seems that your mitochondrial function is being compromised as well. And then we see the menonate. The menonate is also being very interesting because it is involved with the brain health. And we found that in the case of both lactate and both menonate, if you can see converter group right over here, this one in the blue, the expression is super high as compared to the non-converters and healthy controls and even at the baseline. So it means that when you develop the disorder, these two specifically metabolites have a capability to tell you, way more ahead of time when the symptoms being appear, that this person is going to develop the symptoms very soon. Then the next interesting part that I brought for you is that because I do have an access to also for the MRI images for these individuals, like all the look at the brain changes and see how the different brain changes being happening. I also look at these biomarkers and see if they're associated with any brain structures. I found that they are very heavily associated with the pons, and two of them, specifically the ceramide and the menonate, was the one that come up that they are being associated with the brain changes. Now, what is the value over here? अब यहाँ मैं उर्दू में आती हूँ ताकि थोड़ी सी बात जो है ना वो समझ आए कि इसकी खूबसूरती क्या है. जब हम मॉलिक्यूलर स्पेस में कोई भी चीज देखते हैं, जैसे अभी आपने मेटाबोलाइट्स देखे जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए मैंने इतनी हैवी टेक्निक यूज की है, ठीक है. जो एमआरआई आप इमेजेस करते हैं वो बेसिकली इमेजिंग स्पेस है जहाँ पे आप ही देखते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं, खासतौर पर स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हो रही हैं. अब यहाँ पे जो एसोसिएशन है ये हमें ये बता रही है कि जो चेंजेस हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देख रहे हैं वो सिर्फ वहां पे महदूद नहीं है, उनका इम्पैक्ट आपके ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ है. इसका मतलब है कि आप अगर कुछ इमेज देख रहे हैं तो आपके पास एक कैपेबिलिटी है कि यू कैन कनेक्ट दीज टू वेरी ब्रॉड फील्ड्स. यू कैन कनेक्ट द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर व्हिच इज सो लाइक वेरी लो, सो डेंस, with the field of imaging. So you can combine two such classified diverse fields to get a comprehensive picture. So the changes that I'm seeing in the patient is not that in the air, हवा में नहीं है ना, वो तो इसका मतलब है अगर ब्रेन में भी उन चेंजेस के साथ वो एसोसिएट कर रही हैं तो that means that these changes have a worth. These changes are actually making something out of in the world that we can claim something out of that and put them in the clinic, and then we can also test those bone structures with our specific metabolites when we do the clinical trials. तो यहाँ पे ये जो है ना association है two different diverse fields की. This is just a summarization कि ये पहली study है in which we look at the FACS biomarker, we look at the metabolic pathways are altered, and we also looked at they are being associated with the brain structures specifically. Now the second part that I'm bringing for you is a proteomics space. So proteomics is basically a profiling of all the proteins in your body. You see that all the proteins that perform all these biological functions, how those changes are being happening in this individual. So this is a profile that I'm showing you right over here. I identify about 79 differentially expressed proteins between the pre-mutation group overall, which have converter and non-converter, along with the healthy controls. Along with that, I also look very specifically is at how many proteins are being changing, in the term of expression between converter as compared to non-converter, which I found about 227, and then also how many are changes in the progressive stages. Then the interesting part over here is that we also see that between the different visits, what are the changes happening? Not only at specific one visit or the other one, we identify about 170 differentially expressed proteins between V1 and V2 in a converter group, and which means that if these changes are happening between two visits, they have the diagnostic power and they have a power to tell you
how the disease being progressed. Now, what is the interesting beauty about the proteomic profiling? Proteomic profiling is not only looking at the protein. जब हम सिर्फ प्रोटीन को देख रहे हैं तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, मुझे उसका क्या फायदा है? चलें ठीक है जी, ये प्रोटीन ज्यादा है, ये कम है, इसका लेवल ज्यादा है, इसका कम है. रियल वर्ल्ड में उसका क्या इम्पैक्ट है, वहां पे क्या जरूरत है? वहां पे जरूरत इस बात की है कि पाथवेज कौन से इफेक्ट हो रहे हैं. क्योंकि जब ड्रग डेवलपमेंट की हम बात करते हैं ना, कोई भी आप ड्रग स्पेस में बात करते हैं, किसी भी स्पेस में, कोई भी जो ड्रग है उसकी कोशिश ये होती है कि वो एक किसी स्पेसिफिक पाथवे को टारगेट करे और उस पाथवे को टारगेट करके वो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे. तो जब आपको सर दर्द होता है, ठीक है, आप एस्प्रिन लेते हैं, तो एस्प्रिन जो है वो एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थ्रू आपकी बॉडी में एक्ट करती है. तो उसके पीछे बहुत जो है वो थॉरो स्टडी की गई कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रग कुड हेल्प with that particular mechanism to help you with a headache. So that is basically the one we call is like, looking at the pathways. Proteomic has that capability. Proteomic can give you an idea that what are the different pathways that being dysregulated, and it can also tell you that in those pathways, what are the specific signaling channel that being dysregulated. And that's what we needed when we go for the target therapeutic approach. So the first one, I'm just showing you that the different pathways that being distributed between the converter and non-converters, and the second one is we are going into more depth and looking actually the signaling pathways, more specifically associated with the big umbrella and cascades, to see what is the differences happening between visit 1 and the visit 2 of that. Then I also look at the molecular function alterations. I was interested in seeing if I can identify the group of the proteins that being associated with one particular umbrella over here. As you can see, this group of proteins are associated with the mitochondrial function. Here we identify they are associated with the protein synthesis, and here we identify BMP signaling pathway. Now, what is important over here? Why do you think this is important that we have this looking at the molecular function alterations? It means that if I'm interested in seeing if the mitochondrial function is compromised in these individuals, these are the targets right here who are being connected with each other. They are working in one particular pathway. And the dysregulation of these group of protein can give me enough information to tell me what is going on with the mitochondria. So in the term of target therapeutics, it means that approaches need to be more targeted in this particular space right over here. Now, over here, you will appreciate the beauty of that these pieces are not only separate. It's not only the metabolomics or the proteomics by itself. Because we are talking a human population here, and we are talking about the actual human subsets, right? We can integrate these data sets. We can look at the metabolomic and proteomic data, and we can see if we can, by the integration, we have a more comprehensive idea of what changes are being happening in these patient individuals. So over here, I look at that particular pieces, and I found that what particular pathways over here, here is the amino acid, and here's the sphingolipid. Sphingolipid is a myelin sheet in the brain, and most of the neurodegenerative disorders, what we found that these myelin sheet is get thin with the time, and eventually it gets so thin that it could not able to comprehend and take the intact structure with the brain. So that's exactly what we saw on that, and in the term of brain, we saw the same things happening in the molecular space as well. So just to summarize, very first study we look at the proteomic, it's the lipid, we see that the molecular functions being altered, and then also we identify the pathways that's being more targeted, and that is going towards more targeted therapeutic space. Now I'm going to shift a gear for a little bit. It's like I think we are almost towards the end, but I'm going to give you another glimpse to show you that once you have one approach and you have some comprehensive technology in hand, you can not only apply it to see one specific disorder or one specific umbrella, you can also use that technology for a different space as well. So before that, we are in a neurodegenerative space. Now I'm bringing to you the neurodevelopmental disorders or neurodevelopmental space. 22q deletion syndrome. Maybe many of you even heard about that, maybe many of you never. It's a neurodevelopmental disorder. It's an autosomal. The prevalence is rare. The clinical features right here, you can see all of them. Heart problem, to speech, to feeding, frequent learning disorders, all of them. And when I say the neurodevelopmental disorders, let me clarify that. The difference between neurodegenerative and neurodevelopmental is that in a neurodegenerative disorder, you can span a life up to the specific years and then you develop the symptoms. In the neurodevelopmental disorders, this is not the case. जो बच्चे आप देखते हैं जो किसी भी जो है दिमागी अमराज का शिकार होते हैं, वो ज्यादा इस अम्ब्रेला में फॉल कर रहे होते हैं, न्यूरोडेवलपमेंटल. इसका मतलब है कि या बीमारी है या नहीं है, और अगर बीमारी है तो इसका मतलब सिम्टम्स हैं.
तो जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ये आप पैदा ही इन डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं और इसी वजह से इनकी जो क्वालिटी लाइफ होती है ना वो बहुत कम होती है। अब आप सोचिए कि एक डिसऑर्डर ऐसा है जो आपको 50 साल जीने की आज़ादी दे रहा है, उसके बाद आपके सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, एक के साथ आप पैदा हुए, ठीक है, तो वो ये एक जो है ना इनमें सिवियरिटी एक एस्पेक्ट आता है। तो जो 22q डिलीशन सिंड्रोम होता है, व्हाई इज बेसिकली हैपनिंग, इसमें जो है ना वो एक स्पेसिफिक रीजन जो है वो 22q क्रोमोसोम पे वो पूरे का पूरा रीजन डिलीट हो जाता है। उस रीजन में 44 जीन्स हैं इस टाइम, इसका जीन कैरेक्टराइज हो चुके हैं, इसके पूरा स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज हो चुका है, और वो 44 जीन्स जो है उनकी मिसिंग की वजह से, क्योंकि आप सोचिए कि पूरा एक चंक ही वहां से जो है ना वो डिलीट है, तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट जीन्स जब एक इंसान में है ही नहीं, तो वो बच्चा जब पैदा होता है या दुनिया पे आता है, इट ऑलरेडी बीइंग क्लासिफाइड इन कैटेगरी व्हिच इज अ नॉन फंक्शनल, जिसको हम कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल स्पेस। तो यहाँ पे जब मुझे मौका मिला तो आई वाज लाइक कि अच्छा क्यों नहीं हम इस अप्रोच को जो है वो किसी और स्पेस में भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो मैंने रिसेंटली जो है मेरा पेपर अभी 2024 में ही आया है, उसमें मैंने क्या किया कि बजाय इसके कि मैं अलग से मेटाबोलॉमिक करूं, अलग से प्रोटियोमिक्स करूं, वी आर सिटिंग इन 2023 एंड 2024, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी तब तक कि वो मुझे ये लेवरेज दे रही थी कि मैं मेटाबोलॉमिक और प्रोटियोमिक को कंबाइन करूं, which means I can take the sample same time, I can use the same sample subset, I can do the both profiling at the exactly same time। तो उसमें फिर हमें फायदा क्या होता है? उसमें फायदा वो होता है जो हम डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस कर रहे थे पहले, कि एक बड़ा फैक्टर जो आप क्लिनिकल स्पेस में काम करते हैं ना, जो लोग आप में से कर रहे हैं वो शायद इस बात की तायीद भी करें कि सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अगर आप कोई चीज क्लिनिक में लेके जा रहे हैं, $1 मिलियन का क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन कर रहे हैं, तो आप कोई ऐसी चीज प्रपोज नहीं कर सकते जिसमें जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है, आज वो कुछ नजर आ रही है, कल वो कुछ नजर आ रही है, परसों कुछ नजर आ रही है। क्लिनिकल ट्रायल तो फिर इस तरह डिजाइन नहीं होते ना, उनको अगर आप खास बायोमार्कर स्पेस में अगर आप लेकर जा रहे हैं और आप टेस्ट कर रहे हैं बायोमार्कर क्लिनिक में, तो कोशिश ये होती है कि आपके बायोमार्कर जो है वो रोबस्ट हो, जिसका मतलब है कि मैं जितनी दफा मर्जी जितने मर्जी जो है वो पेशेंट सैंपल्स को टेस्ट करूं, वो बायोमार्कर एक्सप्रेस होने चाहिए। दैट्स व्हाई वी कॉल देम बायोमार्कर। और ये जो है ना ये बहुत बड़ा मसला है बायोमार्कर फील्ड का। इसलिए आप देखिए कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ जो काम हो रहा है उसमें आपको कोई भी बहुत कम रोबस्ट बायोमार्कर्स मिलते हैं, खास तौर पर ब्रेन डिसऑर्डर्स के अंदर, और इसीलिए ये काम जो है इसकी नीड बहुत ज्यादा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स यूज किए, और आपको ये थोड़ा सा वैसे ग्लिम्स देने के लिए कि आपको जो आइडिया हो कि ये जो मैं बात करती हूँ बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी, तो उसमें ये है कि हम जो है वो बहुत हैवी स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे होते हैं, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो इतने से 20-25 माइक्रोलीटर इतने छोटे सैंपल से इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। उसको बाय इटसेल्फ इज ऑपरेटिंग बाय द बिग डील, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो डाटा आता है वो इतना हैवी डोज होता है, उसके लिए आपको कंप्यूटेशनल टूल्स, मशीन लर्निंग, वो सारे यूज करने पड़ते हैं, डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट। तो ये सिर्फ जो है वो एक ग्लिम्स है आपको दिखाने के लिए कि कैसे जो है हम सैंपल प्रिपरेशन आती है, फिर आप डाटा कलेक्शन करते हैं, और फिर आपको जो है डाटा प्रोसेसिंग होती है, जिसमें डिफरेंट मॉडल्स लगते हैं, डिफरेंट जो है वो कंप्यूटेशन टूल्स होते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग्स होती हैं, और फिर उसमें जो है वो आप नए डिफरेंट तरीके से अपने सवाल के मुताबिक आप जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है मैंने आपको दिखा रही हूँ कि आई आइडेंटिफाई अबाउट लाइक नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स दैट बीइंग डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड बिटवीन द 22q डिलीटेड सिंड्रोम इंडिविजुअल्स एंड अ हेल्दी कंट्रोल। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी पॉसिबल क्यों नहीं है, ये सवाल शायद आपके जहन में आए, क्योंकि यहाँ पे लोग पैदा हो रहे हैं बीमारी के साथ। जो बच्चा पैदा हो रहा है वो ऑलरेडी ही उस पर 22q डिलीशन सिंड्रोम है, जिसका मतलब है कि वो बच्चा ऑलरेडी न्यूरो डेवलपमेंटल स्टेज में है, वो न्यूरो डेवलपमेंटल जो है वो मेंटली फंक्शनल नहीं है, तो यहाँ पे प्रोग्रेशन जो है वो फैक्टर नहीं आता। तो इसलिए हमारे पास जो है वो सिर्फ 2 ग्रुप होते हैं, या तो हम हेल्दी कंट्रोल रखते हैं या 22q, और मोस्टली ये जो मेरी स्टडी है ये बच्चों पे, तो इसका मतलब है कि मेरा जो स्टडी ग्रुप था वो बच्चे थे 3 से लेके 8 साल की उम्र तक। उसके बाद इनका लाइफ स्पैन कम होता है, न्यूरो डेवलपमेंटल वाले जो बच्चे होते हैं ना बहुत सारे डिसऑर्डर्स में, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उसमें जो है वो 2 मैं स्पेसिफिक आपके पास लेके आई हूँ, एक टॉरिन और एक आर्किडोनिक एसिड, जस्ट टू शो यू दैट एज यू कैन सी if you look at the expression of them, these 2 particular ones as compared to the healthy control, which is right over here, and this is a 22q, you can see how significantly the expression is like so low in the individual who had the disorder as compared to the healthy control individuals. And the second one is that just to show you the differentially expressed protein, this is all information coming from same one experiment, which means that we are integrating both omic approach together for this particular study, and this is just to show you
how the different proteins that being expressed, and this is the number of proteins that being differentially expressed between the TD and the 22q. Then I look at the protein pathways as expected. The intention was to see if there's any pathways that are being altered. We definitely identify a number of pathways over here. And then this was the very first study that we looked at both approaches. We look at the metabolites, proteins, and pathways for the 22q specifically. And this is a one-off study. अभी तक मेटाबोलॉमिक और प्रोटियोमिक की अप्रोच कंबाइन अप्रोच में ये पहली स्टडी है जो 2024 में मेरी पब्लिश हुई है। अब मैं जो काम कर रही हूँ, अब मैं यही सारा जो ओमिक की अप्रोच है इसको मैं यूज कर रही हूँ इस वक्त न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में। मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ मेटाबोलॉमिक्स और प्रोटियोमिक्स फॉर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। और ये जो पूरा आपको यहाँ पे ये ग्रुप नजर आ रहा है ना, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है, इसमें मोटर न्यूरॉन भी है, नर्व भी है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी है और मसल भी है। चूंकि मैं काम कर रही हूँ न्यूरोमस्कुलर डिवीजन के साथ, मेरी टीम जो है वो लीड कर रही है इस वक्त जितनी भी न्यूरोमस्कुलर स्टडीज हो रही हैं पूरे यूएस में, हम उसका पार्ट हैं इस टाइम। क्योंकि हम जो है वो मेरे साथ जो मेरे बॉस काम कर रहे हैं वो जो हेड हैं इस वक्त न्यूरोमस्कुलर डिवीजन के, तो जितने भी क्लिनिकल ट्रायल है, ही इज द वन हु इज रनिंग दोस ट्रायल एंड आई एम द वन हु इज ऑन द रिसर्च एंड सो आई एम वर्किंग विद ऑल द डिफरेंट डिसऑर्डर्स यूजिंग दिस बोथ टेक्निक्स राइट हियर। इसके साथ मैं अब ट्रांसक्रिप्टोम में भी काम कर रही हूँ। मैं भी रिसेंटली जो है वो सिंगल न्यूक्लियस आरएनए सीक्वेंसिंग स्पेस में काम कर रही हूँ और उसका इंटरेस्ट जो है वो यूं इस तरह बिल्ड हुआ कि पहले हम जो है ना बल्क आरएनए काम कर रहे थे, ठीक है, फिर हम सिंगल न्यूक्लियर पे चले गए, यानी कि एक सिंगल सेल स्पेस में चले गए। अब टेक्नोलॉजी इस तक आ गई है, मैं डाटा देख रही हूँ, मुझे मालूम नहीं कि कितनी आ गई है, कह रही हैं आ गई है, मैं जब देखूंगी तो मैं बताऊंगी कि वाकई आ गई है अपने डिसऑर्डर और अपने तजर्बे की बेस पे। लेकिन in past 2 to 3 years we are now on a single nuclei level. So I recently did my single nucleus RNA sequencing, and then the interest factor over there कि आप जो है वो सिर्फ जो ट्रांसक्रिप्टोमिक चेंजेस हो रही है ना, पहले हम देखते थे कि ओवरऑल क्या चेंजेस हो रही है, फिर हमने कहा एक सेल में क्या चेंजेस हो रही है। अब हम जो बात कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, अब वहां पे ये देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियाई में क्या चेंजेस हो रही है। क्यों? वो कहते हैं कि डिजीजेस इतनी डाइवर्स हैं, इनकी जो है वो आप अगर देखिए तो सेल डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, हो सकता है कि एक सेल जो आपको प्रोफाइल दे रहा है उस डिजीज इंडिविजुअल में, दूसरा सेल आपको प्रोफाइल दे ही ना रहा हो। एंड दैट मेक सेंस राइट, हम लोग सेल्स डिवाइड करते हैं, हमारे में डिफरेंट जेनेटिक मेकअप है। तो ये जो है बायोलॉजी कहती है कि अगर आपको टारगेटेड जाना है ना, तो आपको इतना टारगेटेड जाना है, एक न्यूक्लियाई तक आपको जाना है, क्योंकि जब आपने इलाज ढूंढना है ना तो वो ओवरऑल आप एक बंदे पे रख के पूरी पॉपुलेशन पे नहीं रख सकते, आपको कस्टमाइज करना है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रिसीजन मेडिसिन, जिसमें ये कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा लेके आइए, प्रिसीजन लेके आइए, जितना भी आप टारगेट होंगे दैट विल बी द बेस्ट दैट नीडेड राइट नाउ। तो मैंने जो है आप सबके इंटरेस्ट के लिए, मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब भी मैं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती हूँ, मुझे लगता है कि जो साइंस है उसकी खूबसूरती ये है कि इसे कोलैबोरेटिव वर्क, आप उसमें जो है दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, कहीं भी मौजूद हो, आप एक ही जुबान बोलते हैं, ठीक है। मैंने इतनी बातें की हैं, मैं भी आपसे बहुत सी फील्ड ही ना हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि कोशिश ये थी कि जो ये थोड़ा बहुत काम है इसको आपके साथ कनेक्ट किया जा सके, समझा जा सके कि मैं क्या कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैं आपके लिए, जो मैंने थोड़ी लिस्ट आउट की है कि NIH जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो इस वक्त सबसे बड़ी बॉडी है USA में, और वो जो है डिफरेंट स्पेस में अंडर डेवलप्ड कंट्री, स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है उसको ऑफर करती है। वो कैपेसिटी बिल्डिंग में भी ग्रांट्स दे रहे हैं, ट्रेनिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट में भी, कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज भी हैं, रिसर्च फंडिंग भी है, ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव भी हैं। तो अगर आप किसी भी स्पेस में, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो NIH के पास कुछ ना कुछ जरूर है मुख्त ममालिक के लिए। कोशिश सिर्फ ये है कि आप अपने आप को वहाँ जो है वो ढूंढे और उनके साथ कम्युनिकेट करें, एंड देन दे विल सी what you are being interested in, then you can build up the projects। और वो प्रोजेक्ट्स जो इंटरनेशनल मुल्कों के लिए होते हैं, उसकी जो है वो उसमें वो उन्होंने कुछ फंडिंग रखी होती है, जिनका उनका जो है वो ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव अप्रोच के अंदर, जिसमें उनका ये मकसद होता है कि सिर्फ हमारे मुल्क में काम ना हो, अगर दूसरे मुल्क में खूबसूरत काम करने वाले लोग हैं तो उनकी भी मदद की जा सके। ये कुछ ट्रेनिंग्स हैं, आप ये देख सकते हैं, मैंने ये लिस्ट की है आप लोगों के लिए। अगर आप जाते हैं NIH की वेबसाइट पे, ठीक है, तो आप वहाँ पे जो है ये डिफरेंट R21 हैं। अगर आप ब्रेन डिसऑर्डर्स में काम करना चाह रहे हैं, ग्लोबल ब्रेन डिसऑर्डर रिसर्च ग्रांट्स हैं, ये डिफरेंट ग्रांट्स हैं इस वक्त, जो इसमें कभी इनके ना साइकिल्स चलते हैं ग्रांट के। तो एक ग्रांट अगर 3 महीने के लिए ओपन नहीं है तो इसका मतलब है हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ वो ग्रांट ओपन कर दें, ठीक है। तो जो ये है बड़ी इनकी जो ना मतलब बड़ी रेगुलर बेसिस पे ये ग्रांट्स चलती हैं। कभी ये स्मॉल जो है वो फंडिंग स्ट्रक्चर होता है, कभी वास्ट फंडिंग स्ट्रक्चर होता है, कभी आपको कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कभी आपको बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप किस तरह का काम ऑफर कर रहे हैं। दूसरा ये है कि चूंकि मैं स्टैनफोर्ड का हिस्सा हूँ इस वक्त, स्टैनफोर्ड जो है वो इस वक्त दुनिया के टॉप 10 हॉस्पिटल्स में है, स्पेसिफिकली इन US। और जो स्टैनफोर्ड का स्कूल ऑफ मेडिसिन है,
It's a leading right now in not only all over the US but all over the world right now. तो वो मैं हमेशा लोगों को हंसती में कहती हूँ कि हार्वर्ड स्टैनफोर्ड आपस में लड़ते रहते हैं ये ना इसी में कि हमसे आगे कौन एक्सेल करे. तो उनकी वहाँ पे जो है ना वो जंग इस बात पे रहती है ना कि कोलैबोरेशन सबसे ज़्यादा आईवीज की आपस में होती है इस वक्त, लेकिन उनका हमेशा ये होता है कि who can be beat the other one in excellence. और इसके लिए कोशिश होती है कि जहाँ से कोलैबोरेशन क्रिएट की जा सके, अच्छा काम लाया जा सके, हेल्प की जा सके लोगों की किसी भी तरह से, तो वो जो है ना वो एक इंटेंशन है किसी भी इदारे का. ये सिर्फ मैं स्टैनफोर्ड की बात नहीं कर रही, आप किसी भी अच्छे बड़े इदारे को देखेंगे, जैसे माशाल्लाह मैं अब कैम में खड़ी हूँ, यहाँ पे अभी तक जितनी गुफ्तगू हुई है, तो यही है कि मेरा ख्याल है कि हम सब दिमाग जो है वो एक ही ग्लोबल इनिशिएटिव पे काम करते हैं. व्हाट कैन वी डू बेस्ट फॉर द ह्यूमैनिटी. तो स्टैनफोर्ड जो है वो डिफरेंट स्पेसेस में आपको जो है वो हेल्प ऑफर कर सकता है. अगर आप पीएचडी हैं, आप पोस्ट डॉक कर सकते हैं डायरेक्टली. आपके पास अगर आप डायरेक्टली भी पीआई को अप्रोच कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं मुझे पोस्ट डॉक करनी है. कभी कभार जो है वो फंडिंग या ग्रांट जो है वो नहीं उसको एडवर्टाइज करते, बट यू नो इफ यू टॉक विद देम एंड मैं एक बात ये भी आपको बताती चलूँ जो शायद मैं बड़े बरमना इसका इजहार करती हूँ. अगर आप में पोटेंशियल है और स्पार्क है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, वहां पे मौजूद शख्स आपके लिए पैसे लेके आए, जहां से मर्जी आए, आप आइडिया लेके गए हैं उसके पास, उसके काम से रिलेट कर रहे हैं, उसको लगता है कि आपकी जो स्किल सेट है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो पोटेंशियल है वो वैल्यू ऐड करेगा, वो आपके साथ कंबाइन जो है ना ग्रांट्स लिख देंगे, आपके साथ कंबाइन कहेंगे ठीक है लेट्स राइट टुगेदर. क्यों? क्योंकि इंटेंशन सिर्फ ये है व्हाट द बेस्ट वी कुड डू. तो अगर आप किसी को रीच आउट करते हैं और उसके पास पोस्ट डॉक नहीं है, आप ये पूछ सकते हैं कि आपको मालूम है कि कोई और इस स्पेस में काम कर रहे थे, ऑल कनेक्टेड, तो दे आर वेरी हैप्पी टू टॉक विद यू. वो आपको बताएंगे. अगर आप अच्छे से एक प्रोफेशनल स्पेस में उनके साथ बात करते हैं, दे आर बीइंग वेरी हैप्पी एंड दे लाइक टू टॉक विद मी. मैं जब बात मुझे आते हैं लोगों के, तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि अगर मुझे नहीं मालूम कि मुझसे कोई कुछ पूछ रहा है, तो मैं आसपास जरूर पूछूं, शायद किसी और को मालूम हो. अगर नेट पे वो नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो किसी को तो पता होगी ना. तो कोशिश ये होती है कि एक रास्ता जो है ना वो बनाया जाए, एक चैनल क्रिएट किया जाए. क्लिनिकल रिसर्च पोजीशंस होती हैं, विजिटिंग स्कॉलर प्रोग्राम्स हैं, ग्लोबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स हैं, मेडिकल एजुकेशन, क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशन रिसर्च जिसका मैं हिस्सा हूँ, इंटरनेशनल फेलोशिप्स और ग्रांट्स हैं. उसके अलावा आपको जो है वो नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं एडिशनल मेरी सिलेक्शन हुई है. दीज आर लाइक अ प्रोफेशनल एसोसिएशन स्पेस जहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं जो डिफरेंट स्पेसिस में काम कर रहे हैं. और फिर क्लिनिकल कोलैबोरेशन इज डेफिनेटली, मैं और डॉक्टर अजरा भी इस पे बात कर रहे थे कि क्लिनिकल कोलैबोरेशन इज आल्सो बीइंग वन ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट स्टैनफोर्ड इज वेरी इंटरेस्टेड. With this all said, I would really like to thank all of my team, all of my collaborators. All the work in my Stanford is being in collaboration with my boss and Dr. John Day. He's a professor, he's a director of Stanford Division of Neuromuscular Medicine right now. And then the work that I was showing with you before from UC Davis Mind Institute was with Dr. Flora Tassani. She's a professor. She's also a director of the molecular core of Fragile X, which means that she is testing each and every person who has a Fragile X associated disorder right now in the world. So she has this biggest core right now, and she's building up the biggest biobank. Along with that, I'm also being very thankful for all the funding resources that I get past all these past years that help me to present you what I've been doing. If you're being interested in contact with me, even after this talk, I am being actively available on the LinkedIn. You can connect with me over that professional network. You can also send me an email on my mzafar@stanford.edu, and then if you're interested in more reading about my work, you can also book me at the Google Scholar. Along with this all said, I think मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त के लिए, आप सबके यहाँ मौजूद होने के लिए. आपका कोई भी सवाल है, I'm all ears. Thank you. हमने जो फ्रैजाइल एक्स में हमने काम किया है ना, तो ये जो फैक्ट सेट है इसी की एक आगे एक फॉर्म है, उसको कहते हैं फ्रैजाइल एक्स. फ्रैजाइल एक्स में इसमें सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है कि जो 200 है ना, ये 200 से एक्सीड कर जाते हैं, तो जीन शट डाउन होता है, तो फिर वो बच्चे जो है वो पैदा होते हैं न्यूरो डेवलपमेंट. तो जो फ्रैजाइल एक्स में हमने काम किया था, तो उस टाइम हमने जो है वो आगा खान से कोलैबोरेशन की थी, हमने सैंपल वहाँ से मंगवाए, और उसमें भी यूँ था कि उनका इंटरेस्ट था कि हम जो है, क्योंकि डॉक्टर फ्लोरा जो हैं ये इनके पास बायोबैंक, which means कि दुनिया में जितने भी लोग इस केस में अफेक्ट हो रहे हैं जीन से, हमारी लैब में उनके सैंपल टेस्ट के लिए आते हैं. तो उसमें भी यूएस से तो ओवरऑल सारे ही आते हैं, क्योंकि वो एक रूल है, लॉ है, ठीक है. जब वो डायग्नोस होते हैं तो वो भेजते हैं कि ये कोड है, आप यहाँ पे भेजिए, और उनको कोड फाइनलाइज करते हैं. तो उसके सिलसिले में कुछ जो है जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हमें रीच आउट किया आगा खान से. तो उन्होंने कहा जी हमने कुछ पेशेंट देखे, हमें लगता है कि फ्रैजाइल एक्स में फॉल कर रहे हैं, तो आप जो है उनको टेस्ट कीजिए. तो उस स्पेस में हमने उनके साथ काम किया था. मेरा ख्याल है वी आल्सो हैव सम
चूंकि ये रेयर डिसऑर्डर्स है तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर आ जाता है, तो लेकिन उसमें फिर ये एक टेस्टिंग वहाँ से हो जाती है, सैंपल यूज टेस्टिंग कर लेते हैं। I'm Dr. Nadeem. Thanks for such a wonderful talk. So my first question is, you did protein profiling. So what molecular techniques you use for profiling? My second question is, you find 170 different proteins. You have compared with some individuals who are healthy and the patient. So did you find any new protein which was not present in the profile of healthy individual? And if you find any new protein, so did you find the gene responding to this stress or this disorder? So very good question. Let me come for your first question. So you asked me that what techniques we use for that. So mostly for these all omic technologies, we go with the mass spec, or either we use the gas mass spectrometry, we use the orbit mass analyzers. So those are the big platforms. So when I say you can think that we have for sequencing, we have a sequencer, right? तो जब हम कहते हैं sequencer है, अब उसमें इतने सारे sequencer, ठीक है? अब वो जो अलुमिना पे अगर आप काम करते हैं, तो अलुमिना की तो पूरी एक लाइन है। तो इसी तरह जब हम ये प्रोटीन जो है omics space में काम करते हैं, we have this very specific mass spec technologies, जो कि डिपेंड करता है कि आपका क्या इंटेंशन है। So for mass spectrometry, first you need to, separate your protein by 2D based technique. So did you perform this, or how you separate your protein? वो अब नहीं होता। वो 2D पार्ट जो है, जो आप कह रहे हैं कि पहले आप 2D पार्ट से सेपरेशन करते थे, अब जो है वो बहुत पहले जब बिल्कुल टेक्नोलॉजी स्टार्ट में थी डॉक्टर साहब, उस टाइम शायद ऐसा काम होता था। जब से मैंने काम करना शुरू किया, मेरा तो ये सारा काम तो उससे पहले जब बिल्कुल ये बिल्ड कर रहे थे ना, उस टाइम चूंकि टेक्नोलॉजी बिल्ड हुई थी तो उसको बहुत ज़्यादा जो है ना एविडेंस की जरूरत होती है एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर के लिए। तो उस टाइम जो है ना वो इस तरह की जेल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड किए जाते हैं। अब जो है वो सिंपल जो एक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है कि आप जो है बेसिकली अपना सैंपल जो है ना मशीन में लोड करते हैं। अब वो मशीन क्या करती है, वो डिसोसिएट करती है बाय द पावर। तो पावर के साथ वो आपको जो भी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, उसको जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उसको श्रेड करती है। उसमें आप ट्रिप्सिन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट एंजाइमेटिक डिपेंड अप्रोच आप क्या चाह रहे हैं। और उसके बाद वो जो है ना वो डिफरेंट अप्रोचेस से डिपेंड करता है आप लिक्विड है गैस, आप किस तरह का यूज कर रहे हैं, आप आइसोटोपिक जाना चाह रहे हैं या ग्लोबल जाना चाह रहे हैं। वो ईच एंड एवरी जो प्रोटीन है ना उसको पास थ्रू करती है आपके एनालाइजर स्ट्रक्चर। And that's one where you have this very tiny, I will say, detecting structure, the detectors जिसे कहते हैं, जो identify करते हैं क्या है। And then I can definitely send you some, because with the respect of everyone's time, I can send you where we are standing now at STEM. तो आपको थोड़ा idea हो जाएगा कि अब जो STEM पर we stand बहुत latest है। Once again, you cannot use only mass spectrometry. You need with LC. You have to separate. Liquid chromatography, mass spectrometry, only mass spectrometer. हाँ जी, बिल्कुल आपकी ऐसी बात है। ये जो omics space है सारी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। My second question, did you find any new protein? आपने बात की ना न्यू प्रोटीन, तो ये जितने प्रोटीन मैंने आपको बताई हैं ना, ये सारी प्रोटीन्स हेल्दी कंट्रोल में नहीं, ये उनमें थी जो डिजीज डेवलप कर रहे थे अलोंग द वे। तो जब हम देखते हैं ना डिफरेंट विजिट्स की बात करते हैं कि विजिट 1 है या विजिट 2 है, या बिटवीन द विजिट उसमें क्या चेंजेस आ रही है, कन्वर्टर इंडिविजुअल, कन्वर्टर वो है जिनमें बीमारी डेवलप हो रही है अलोंग द टाइम। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये सारी की सारी उन इंडिविजुअल्स में है लेकिन हेल्दी कंट्रोल में नहीं। एंड दैट्स व्हाई वी क्लेम दैट दीज शुड बी अ बायोमार्कर, क्योंकि अगर वो हेल्दी नहीं भी होती फिर तो उसका मतलब है कि वो उनकी कोई वो इंडिविजुअलिटी नहीं है या उनकी कोई यूनिकनेस नहीं है। So, please last question. हाँ जी। Did you find the gene responding to this stress? अच्छा, अब आप ये बात करेंगे ना कि जीन, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं ना तो each protein is being corresponding to some of the gene। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि very recently I am just working on transcriptomics space। तो उसमें इंटरेस्ट यही है कि हम देखें कि अगर सिंगल न्यूक्लियस स्पेस में चेंजेस आ रही हैं, खासतौर पर ट्रांसक्रिप्शनल स्पेस में, हाउ दोज आर बीइंग ट्रांसलेटेड इन द प्रोटीन। तो मैं वो ग्लिम्स दे रही हूँ कि इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट हमारा इस टाइम ये है जो मैं अभी काम कर रही हूँ, वो ये है कि हम देखें कि डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट्स कैसे चेंज हो रही हैं और क्या हमारे पास जो है वो प्रोटीन आइसोफॉर्म्स भी वैसे हैं जो उसको क्रॉसपॉन्ड करें। तो ये जो अभी मैं बता रही हूँ आपको काम जो बिल्कुल न्यू अभी मैं जिस पे इस पर लगी हुई हूँ अपना दिमाग इस्तेमाल करने, वो ये इसका इंटरेस्ट ये है कि अगर मैं आइसोफॉर्म्स ट्रांसक्रिप्शनल स्पेस में देख रही हूँ, आफ्टर ट्रांसलेशन क्या प्रोटीन में वो ट्रांसलेट हो रही है, तो वो दो जो ब्रिजिंग है ना, और उसके उसमें ऑफ कोर्स वो बाय इटसेल्फ इज यूनिक अप्रोच, वो भी नहीं इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए इसको हम पसंद करें। उसका सबसे बड़ा मसला ये है इस टाइम जो जिस पे मैं इस वक्त दिमाग इस्तेमाल कर रही हूँ, दो डिफरेंट डाटा सेट्स को कैसे कॉम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे पास टूल्स की लिमिटेशन है कि आप ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटियोमिक को कैसे करते हैं। तो उसके लिए फिर आपको लाइब्रेरीज खुद से बिल्ड करनी, क्योंकि आप ऑलरेडी यूज लाइब्रेरीज को नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसमें वो कॉम्पिटिशन पावर नहीं है।
मशीन लर्निंग स्पेस को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इस डेटा को, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं यही बात कर रहे थे कि जो है जब आप क्लिनिकल या ह्यूमन स्पेस में काम कर रहे होते हैं तो उसमें जो है आपके पास डाटा तो इतना सारा आ जाता है, ठीक है ना, ये तो आपके पास पूरा एक वो ग्लोबल इतनी बड़ी बड़ी आपके पास फाइलें आ जाती हैं, उसमें से वो फिशिंग करना और वो ढूंढना जो है ना, वो एक्चुअली दैट्स व्हाट वी कॉल इट डिस्कवरी। जब मैंने आपको अपनी टॉक स्टार्ट की तो मैंने कहा बायोमार्कर डिस्कवरी या आइडेंटिफिकेशन, तो उसकी यही वजह है कि आपने इतने बड़ी सोचे कि दरिया है नॉलेज का, और उसमें से आपने एक मखसूस चीज़ वो ढूंढनी है जिसको आप टेस्ट भी कर सकें और पेशेंट के साथ हेल्प करें। So one more question please. So मेटाबोलाइट्स के लिए आपने उसको रेडियो लेबलिंग की वैसे स्टडी करा है? हमने वैसे ये हमारा ग्लोबल अप्रोच थी। रेडियो लेबलिंग आप तब करते हैं जब आप टारगेट अप्रोच पे जाते हैं डॉक्टर साहब। टारगेट अप्रोच में ये होता है, दो अप्रोचेस होती हैं इस वक्त आपके सबसे बता दूं कि दो अप्रोचेस होती हैं। एक जो हम करते हैं डिस्कवरी अप्रोच, जिसमें आप ग्लोबल जाते हैं, आपको नहीं पता वहाँ पे क्या है, जैसे ये बिल्कुल तो पहले स्टडी थी ना, कुछ था ही नहीं, आपको पता ही नहीं है क्या, तो आप जो है वो ग्लोबल जाते हैं। इसका मतलब है आप ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पे सब कुछ क्या है। जब आप एक दफ़ा उसको वैलिडेट कर लेते हैं, सपोज आई फाउंड सम बायोमार्कर, फिर वो बायोमार्कर मैंने वैलिडेट किए। वैलिडेट कैसे किए? मैंने एक बड़े ग्रुप में ग्लोबल स्टडी की, ठीक है, वही बायोमार्कर से वो दोबारा आते हैं, फिर आती है टारगेट अप्रोच। टारगेट अप्रोच में क्या होता है, अब मुझे पता है मैं क्या ढूंढ रही हूँ, ठीक है, अब मेरा अगला सवाल है जो मैं ढूंढ रही हूँ इसकी इंटेंसिटी क्या है, क्या इसमें इतनी डायग्नोस्टिक पावर है कि अगर मैं इसको क्लिनिक में क्लेम करती हूँ कि ये बायोमार्कर है, ठीक है, तो क्लिनिक के पास तो मेरे जैसी बड़ी बड़ी मशीन नहीं, उसको तो एक सिंपल ऐसे चाहिए, एक सिंपल टेस्ट चाहिए इसको देखने के लिए। तो क्या इस बायोमार्कर में इतनी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी है कि ये किसी इजी ऐसे के थ्रू क्लिनिक में उस पेशेंट से डिटेक्ट किया जाए? जैसे हम सब क्लिनिक स्पेस में काम करते हैं जो लोग, जब भी कोई ब्लड टेस्ट होता है वो कितना आसान है, एक आप ट्यूब लेते हैं उससे कितनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो वो जब काम स्टार्ट हुआ तो वो ऐसे होता है, फिर उसको स्ट्रेटेजाइज करते हैं ऑल द वे टू, जैसे आप बात करें ना, टू मोर एंड मोर टॉलरेट फॉर द डायग्नोस्टिक। हमारे पास 20 हमारे पास 22 क्यू थे और 20 ही करते हैं, और 22 क्यू जो है ये भी रेयर है, इसके पेशेंट ये क्लिनिक में आना मुश्किल है, और ये फर्स्ट टाइम कम है, बच्चे नहीं 10 12 साल से नहीं जा सकता। हाँ ये तो है, ये 22 क्यू तो अभी तो इस पे काम भी अभी पता थोड़ा सा, एक तो ये है ना कि न्यू डेवलपमेंटल में अनफॉर्चुनेटली फैक्टर नहीं होता है क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो हम जब हम बुलाते हैं लोगों को कि आप आइए, ईस्ट कोस्ट से कोई आ रहा है तो इतना ट्रैवल करके आता है, ठीक है, या माइन में आ रहा है या किसी भी जगह स्टैंफोर्ड में आ रहा है, तो वो उनके लिए सफ़र बहुत मुश्किल है ऐसे बच्चे के साथ। तो फिर कोशिश ये होती है कि इसीलिए कोशिश होती है कि इस तरह की जो स्टडीज़ है ना, खासकर न्यू डेवलपमेंटल मल्टी लोकेशनल की जाए, ताकि अगर कोई ईस्ट कोस्ट में है तो वो हार्वर्ड चला जाए बजाय हमारे पास स्टैंफोर्ड में आने। तो ये जो आप कह रही हैं ना, ये तो बट वी आर ऑल वर्किंग। What is the specific reason for selecting this particular disease? Because it is a very rare disease. इसके मेरा जो डॉक्टर साहब काम है ना वो सारा रियल ही स्पेस में, मैं सिर्फ इनके साथ नहीं, मैं वैसे भी न्यूरोमस्कुलर में भी बहुत काम कर रही हूँ, डिस्ट्रॉफिस के साथ, एट्रोफिस के साथ। मुझे न्यूरोमस्कुलर स्पेस खुद पर्सनली अच्छी है शायद, क्योंकि उसमें वो मैं एक बात बड़ा कहती हूँ बड़े शौक से कि जब कोई चीज़ कम होती है ना, जिसके बारे में इतनी कम होती है, वो जितनी चैलेंजिंग होती है उतना ही उसमें स्कोप नहीं होता। अभी अगर आप दूसरी बीमारियाँ देखिए, जैसे ऑटिज्म हो गया या अल्जाइमर, इसमें बड़े ग्रुप्स काम कर रहे हैं, ऑन्कोलॉजी देख लीजिए, कैंसर में इतने बड़े बड़े ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तो उनके पास फंडिंग की इसी लेवल से, लेकिन फिर उसमें वही है कि आपका अपना इंटरेस्ट कम है। Clinically, अगर आप clinical trials में जाना चाहे, patient के आप लेके जाना चाहे, तो आपको patient बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी हमने न्यू डेवलपमेंटल में जो मैंने क्लिनिकल ट्रायल किए, हमने फ्रेजिलेक्स के साथ किए, मैं बता रही हूँ डॉक्टर साहब बता सकते हैं उनको, तो फ्रेजिलेक्स जो है वो इसी टैक्स टेस्ट के एडवांस फॉर्म है जो न्यू डेवलपमेंटल है, क्योंकि उसमें जीन काम नहीं होता। हमने उसमें क्लिनिकल ट्रायल किए, उसमें हमने जो है ना बेसिकली जो ऑलरेडी डेवलप्ड ड्रग्स थी ना उनको हमने टेस्टिफाई किया, और उसमें डॉक्टर साहब इंटेंशन, अभी जो सी बात है, इंटेंशन जो है ना वो करेक्शन ऑफ डिसऑर्डर नहीं है, अभी जो मेन इंटेंशन है वो है डिजीज सिवियरिटी को कम करना, क्योंकि ये जो न्यू डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है एक तो बच्चों में ऑफकोर्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना एक बर्डन फैक्टर बहुत बड़ा है, तकलीफ का फैक्टर पेरेंट्स के लिए ये बात बड़ी ही तकलीफ है कि उनके पास एक ऐसा बच्चा है जो और हम जब काम करते हैं यकीन मानिए बड़ी तकलीफ मुझे खुद बहुत होती है, मैं जब जाती हूँ बच्चों से मिलती हूँ कि वो बच्चा ना तो कम्युनिकेट कर पा रहा है, ना वो खा पा रहा है, ना वो बैठ पा, तो वो पूरी जो है वो एक बच्चा या इंसान नहीं है, वो पूरा खानदान इफेक्ट हो गया उस बच्चे की वजह से। अब प्रॉब्लम उसमें बड़ा जो है, अभी जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं उसमें बड़ी कोशिश न्यू डेवलपमेंटल स्पेस में हम ये कर रहे हैं कि उनको उसकी जो सिवियरिटी
ट्रायल हुआ मेटफॉर्मिन आपको पता है डायबिटीज ड्रग है, उसका बड़ा इम्पैक्ट नजर आया। उसमें वो बेसिकली जो है वो डायबिटीज के लिए यूज की जाती है, अभी वो ओबेसिटी के लिए भी यूज करें। उसके कुछ जो है वो एलोपैथिक इफेक्ट्स भी उसकी बात हुई कि जी इट कैन सूद द नर्व, इट कैन काम डाउन। तो हमने पूरा क्लिनिकल ट्रायल उसमें किया, मल्टी लोकेशन क्लिनिकल ट्रायल था वो, उसके भी देखे रिपोर्ट्स क्या आती हैं। लेकिन आपको बताने का ये मकसद ये है कि नई ड्रग्स जो हैं वो डेवलप करना न्यूरो डेवलपमेंटल में एक बहुत बड़ा चैलेंज। तो अभी जो बेस काम वो भी यही हो रहा है कि जो ऑलरेडी डेवलप ड्रग्स हैं उनको हम किस तरह यूटिलाइज करके इस डिसऑर्डर के लिए हम जो है वो कुछ जो है वो सूदनेस क्रिएट कर सकते हैं। मुझे पर्सनल नहीं पता कि 22 में जो है वो स्टेम सेल इन्फ्यूजन या जो है वो टारगेट जो ड्रग अप्रोच है स्मॉल मॉलिक्यूलर अप्रोच उसमें चले न्यूरोमस्कुलर में कर रही है। न्यूरोमस्कुलर में इस तरह का जो है वो बहुत अप्रोचेस काम जैसे कि है आपके पास में एडी भी है और आपके पास जो है वो एंटीसेंस भी है, आपके पास जो है स्टेम सेल इन्फ्यूजन भी हो रही है। तो उसमें जो है स्टेम सेल थेरेपी डायरेक्टली उस म्यूटेशन को तो नहीं ट्रीट करेगा, नो ओवरऑल एक जनरल इससे उसको म्यूटेशन को ट्रीट नहीं करेगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है स्टेम वो ये है बिकॉज द मसल रिलेटेड, तो ये है कि हम मसल पॉपुलेशन को शायद जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें स्ट्रेंथ, क्योंकि हम नया एक ब्लड डाल रहे हैं ना वेरी बेसिकली, बट तो कोशिश ये शायद में नया ब्लड जाता है तो इट माइट बी हेल्प इन दैट मस्कुलर पार्ट, वहाँ पे जो ऑलरेडी सेल मर चुके हैं शायद ये कुछ नई जिंदगी डाल ये मेरा ख्याल है डायबिटिक ऑटिज्म के यहाँ पे काफी हाँ अभी वो सारे आइडियाज काम हो रहा है डिफरेंट स्पेस में, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, तो उससे नई ड्रग्स भी आती हैं। कभी ड्रग बहुत अच्छे ट्रायल पे चल रही होती है देन इवेंचुअली जस्ट स्टॉप हो रही है, उसको भी फिर वो भी सही से वी आर वर्किंग विद ह्यूमन आर वेरी कॉम्प्लेक्स, वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स। Okay, and Dr. Usman, thank you so much for a very thought-provoking talk. I'm going to talk about metabolites. Right? You did metabolics and you linked the relationship between disease progression and lipid metabolism. जी But typically it's a big one. So to narrow down your analysis of what you are talking about, you know, डॉक्टर साहब आई वुड से बिकॉज दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जो मैं कर रही हूँ वो लिपिडोमिक्स, वी आर गोइंग मोर थॉट, वो अभी जो है ना वो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो ये जो मैंने आपके सामने काम शुरू किया है ये ग्लोबल मतलब हम पूरी लिपिड प्रोफाइल देखते हैं। तो पूरी लिपिड प्रोफाइल में मैंने इंशाल्लाह कुछ चीज़ सिखाया है जिसमें जो है ना वो डिफरेंट फंक्शनल क्लासेस हैं जहाँ पर लिपिड जो है अफेक्ट हुआ है। तो इसका इंटरेस्ट जो मेन मैं आपको बताऊँ इसका जो है वो वैल्यू इसकी क्या थी, इससे पहले फैट टेस्ट में लिपिड डिसरेगुलेशन को रिपोर्ट नहीं किया। तो ये जो है पहला एविडेंस हमने दिया कि जी लिपिड तो डिसरेगुलेट हो रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी सब डिसरेगुलेट हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियोटाइड सेल इज वेरी बिग क्लास और ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है जिससे बाकी डिसऑर्डर में इस पे काम हो चुका है। सो वी कैन यूज दैट एंड ट्रांसलेट दैट। so I think it will be really interesting to see the link of cholesterol regulation with this relation. Because generally this is related to the neuro, related knowledge they are having in that. So अभी ये बताइए आपको कोलेस्ट्रॉल पे इस पे मैं बात बल्कि अक्सर भी कहती हूँ कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर स्पेसिफिकली फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये चीज़ तो आपको एज अ फैक्ट साइंटिफिक प्रूव है ना। वैसे भी इस वक्त ये बात जानी जा चुकी है फील्ड में कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपना लाइफ स्पैन 50% बेटर कर लेते हैं उस शख्स से जो एक्सरसाइज नहीं करते। और अगर आप में ये कोई जेनेटिक पुराना खासा मसला है तो आप अपनी प्रोग्रेशन को 50% डिले कर सकते हैं एज कम्पेयर टू उस इंसान के जो मैंने एक्सरसाइज नहीं की। तो ये हम तो फैक्ट पे बात कर रहे हैं लेकिन हम जो है वो हर तरह से डिफरेंट कॉज सकते हैं। ये एक चीज़ जो है डिफरेंट क्लासेस की इवन अल्जाइमर में ये बहुत हैवी